Hello dear students, welcome back to our another lecture of molecular biology techniques called native page. So in this lecture we are going to discuss about the technique called as native page. Native means original and page stands for polyacrylamide gel electrophoresis. Let's understand first what is electrophoresis. And already we have discussed about the electrophoresis, agarose gel electrophoresis in our previous video. So I request all the students to watch the previous lecture of agarose gel electrophoresis, because the protocol for agarose gel electrophoresis is somewhat similar to native page. The protocol are same for this both the techniques. Okay, so रिवाइज करते समराइज करते कि इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमने देखा क्या था. इलेक्ट्रोफोरेसिस इट इज अ सेपरेशन टेक्निक दैट इज बेस्ड ऑन द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज पार्टिकल. इफ वी स्प्लिट द वर्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस then we get electric and phoresis. Okay, electric means electric field and phoresis means movement of particles. तो यहाँ पर पार्टिकल्स और बायोमोलिक्यूल्स, तो यहाँ पर बायोमोलिक्यूल्स ये मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर व्हेन वी अप्लाई द इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, सो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस. दिस इज द इलेक्ट्रोफोरेटिक चेम्बर. तो ये इलेक्ट्रोफोरेटिक चेम्बर ये हॉरिजॉन्टल में है, दो टाइप्स में अवेलेबल होता है, हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल. ओके, सो फॉर द SGS, sorry not SGS, but for the native page and even SGS page we use the vertical type of electrophoretic unit. Okay, so different types of buffers are used like barbiton buffer. In the electrophoresis technique different types of buffers are used. तो पहला है barbiton buffer जिसका pH around 8 होता है and it is used for the separation of proteins present in the serum and it shows the poor resolution. इसके प्रॉपर्टी में मतलब सेपरेशन इतना प्रॉपर नहीं होता है. इट इज द वीक बफर. सेकेंड इज फॉस्फेट बफर. द pH of phosphate buffer is around 7. It is used for the separation of enzymes and even it has also a low buffering capacity plus high conductivity, means it requires the high voltage supply for the separation of biomolecules. Next is tris borate EDTA buffer which is also known as TBE. The pH of this TBE buffer is around 8. This TBE buffer and TAE buffer we have discussed in our previous video of agarose gel electrophoresis. So this both the buffer are used for the nucleic acid separation like DNA and RNA and it shows the good separation activity. Buffering capacity is also high and low conductivity, low voltage is required, low power supply is required. Next is tris glycine buffer. The pH of this tris glycine buffer is more than 8, means around 8.8. okay, 8.7 to 8.8 and it is used for the separation of protein. It has high buffering capacity and it require low power supply. So now this native page and SGS page, this both the techniques are used for the separation of protein. तो इन दोनों टेक्निक्स के लिए हम कौन सा बफर यूज करेंगे? इनमें से we will use the tris glycine buffer whose pH is more than 8, that is 8.7 to 8.8. okay, next is electrophoresis process. ये है how the electrophoresis has been carried out, that is there. तो यहाँ पर हम क्यों देख रहे हैं ये फिर से? because the procedure of this native page and the AGE, that is agarose gel electrophoresis, is similar. तो यहाँ पर है आपका you have to set up the gel, you have to prepare the gel. हमने agarose gel electrophoresis में we have used the agarose gel. Here we will use the polyacrylamide gel.
Okay, why we will use the polyacrylamide gel? The answer of this question is in further slide. Okay, so we have to set up the gel, prepare the gel, pour that gel into the casting tray. After pouring the gel into the casting tray, we have to put the comb to create the wells, add the buffer solution, load the sample which you want to separate into the wells, then fix the electrodes to the power supply and allow it to run for 40 to 45 minutes. After running of the gel, observe that gel under UV light. ठीक है, ये सब हमने कल in detail procedure means in previous lecture we have discussed this procedure in detail. Okay, next, now what is native page? Native page ये क्या है? PAGE stands for polyacrylamide gel electrophoresis and it is a type of gel electrophoresis. जैसे agarose gel electrophoresis है वैसे ही ये है polyacrylamide gel electrophoresis. So PAGE, it is a type of gel electrophoresis and there are two types of PAGE. First is SDS PAGE, which stands for sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis, and second is native PAGE. Native means original and PAGE means here we use the polyacrylamide gel, okay, and carry out the electrophoresis. So the name is given native PAGE. अब SDS PAGE में हम SDS PAGE we will discuss this in next lecture. In this lecture we will discuss about the native PAGE. तो SDS PAGE में हम डिटर्जेंट यूज करते हैं टू ब्रेक द प्रोटीन, टू डीनेचर द प्रोटीन, बट इन नेटिव PAGE वी डोंट यूज एनी टाइप ऑफ डिटर्जेंट. हम यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई भी डिटर्जेंट यूज नहीं करते, ओरिजिनल फॉर्म में प्रोटीन हम यूज करते हैं. ओके, सो दैट इज द नेटिव PAGE. लेट्स सी. Native PAGE, it is used to separate the protein in their native states according to differences in their charge density. तो यहाँ पर हम प्रोटीन सेपरेट करते हैं in their original state. Original state means what? Now proteins, these are available in 3D form. Okay, secondary structure है, tertiary structure है, quaternary structure है. आप इसमें से कोई भी प्रोटीन उठाओ for the separation. Okay, कोई भी प्रोटीन आप लो for the separation. When you will separate out that protein molecule, it will remain in the original form. Means you have taken the secondary structure protein, it will remain in the secondary structure. If you have taken tertiary structure of protein, it will be in the tertiary structure. तो उसे हम denature नहीं करेंगे, जैसा है वैसे ही उठाएंगे और वैसे ही separate out करेंगे. Okay, तो SDS में हम क्या करते हैं? We use the detergent to break down the protein. Means if the protein is in secondary structure, we break into the primary structure and then we use. But यहाँ पर जैसे प्रोटीन है हम वैसे ही उसे यूज करेंगे, वैसे ही उसको separate out करेंगे in the original form, in the native form. Okay, so it is known as native PAGE. Getting my point? So that has been there. And native PAGE, and this proteins are separated on charge to mass ratio, means on the basis of charge and the mass and the size, the proteins are separated. Okay, and in SDS PAGE proteins are separated on basis of mass. SDS PAGE हम बाद में डिस्कस करेंगे, but native PAGE, in this proteins are separated on the basis of charge, mass, size and molecular weight. Okay, so native state of protein means proteins are in folded state, not denatured or unfolded state. तो यहाँ पर प्रोटीन कैसे होते हैं? in the folded state, मतलब secondary structure है तो secondary structure, और हम उससे denature नहीं करते, उससे break नहीं करते, उसका conversion primary structure में नहीं करते. Okay, and there are no denaturants present. किसी भी तरीके का हम कोई भी डिटर्जेंट यूज नहीं करते, कोई भी केमिकल यूज नहीं करते फॉर द डीनेचुरेशन. दैट इज बिन देयर.
about this native page, or many proteins are shown to be enzymatically active after separation by native page. Thus, it is used for the preparation of purified and active proteins. So, when we separate out the proteins, जब हमारी native page technique परफॉर्म हम जब कर चुके होते हैं, वी गेट द प्रोटीन इन द ओरिजिनल फॉर्म इन द सेपरेटेड फॉर्म. ओके, हमें ओरिजिनल फॉर्म में प्रोटीन्स ये सेपरेट आउट करके मिलता है, एंड दैट इज एंजाइमेटिकली एक्टिव. ओके, सो मेनी प्रोटीन्स आर एंजाइमेटिकली एक्टिव आफ्टर सेपरेशन बाय नेटिव पेज टेक्निक, and in rare cases they get disturbed. Okay, the structure is damaged, or the structure gets disrupted in rare cases. Okay, so that has been there. Now, as I told, native page uses polyacrylamide gel instead of agarose. Why? Because agarose contain large pore size, and this large pore size is used to separate large size molecules like DNA, RNA, large size proteins, etc. But in polyacrylamide gel, the pore size of this gel is very small as compared to the agarose. So it is used for the separation of small size molecules like protein. Okay, अगर आपको large size molecule separate करने हैं, you will use agarose. अगर आपको small size molecule separate करने, you will use polyacrylamide gel. So this agarose is used for the separation of DNA, RNA, and this polyacrylamide gel is used for the separation of proteins. Let's see the principle of this polyacrylamide gel electrophoresis native page. So this is depend on the, or particles are separated on the basis of charge density and size, shape, as well as molecular weight. What is this charge to mass ratio? Means molecules are separated on the basis of charge, जो भी चार्ज प्रेजेंट होता है प्रोटीन पर, नेट चार्ज, एंड द मॉलिकुलर वेट. ओके, तो ओवरऑल यही कहने का मतलब है कि प्रोटीन्स आर सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, साइज, शेप एंड मॉलिकुलर वेट. सो हाउ the molecules are separated on the basis of charge? Here the buffer which we used, that is tris-glycine buffer, ये बहुत important है. pH buffer का बहुत important है. So pH of the buffer ये इस तरीके से सेट किया जाता है कि all proteins at that pH will carry net negative charge. ठीक है, टोटल उस प्रोटीन पे या फिर उस अमाइनो एसिड पे कौन सा चार्ज होना चाहिए? निगेटिव चार्ज. तो जो बफर हम यूज करते हैं, ट्रिस ग्लाइसिन बफर, ओके, द पीएच इज अराउंड 8 और मोर देन 8, तो उस बफर का पीएच कुछ इस तरीके से एडजस्ट किया जाता है कि जो हमारे प्रोटीन्स हैं, जो हमारे अमाइनो एसिड्स हैं, उस पर टोटल निगेटिव चार्ज आए. बेशक वो पॉजिटिव हो, लेकिन उस पर निगेटिव चार्ज आए, एंड दैट इज टेम्पररी, नॉट परमानेंट. ओके, एंड द प्रॉपर्टी, एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है एट स्लाइटली बेसिक पीएच, मीन्स अराउंड 7 to 8.5, उसे हम बोलते हैं स्लाइटली बेसिक पीएच. तो एट स्लाइटली बेसिक पीएच नेट चार्ज ऑफ प्रोटीन इज निगेटिव. ठीक है, अगर आप बफर का पीएच ये 7 to 8.8 के बीच में करते हैं, तो ऑटोमेटिकली प्रोटीन्स ये निगेटिव चार्ज एक्वायर करते हैं. ओके, एंड so here we adjust the pH of the buffer in such a manner that our proteins, our amino acids will acquire the negative charge. Getting my point? So that is the very important point to consider. Being negative charge, they will migrate to anode. अगर आपको इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्रोसीजर याद होगी, तो हमने जो वेल्स प्रिपेयर की थी, ये वेल्स हमने निगेटिव साइड पे प्रिपेयर की थी. ओके, एट द निगेटिव साइड मीन्स एट द कैथोड हमने प्रिपेयर की थी, और हम सैंपल भी कहाँ लोड करते हैं? टूवर्ड्स द निगेटिव चार्ज, दैट इज टूवर्ड्स द
कैथोड इलेक्ट्रोड. ओके, तो यहाँ पर भी हम कहाँ लोड करेंगे, टूवर्ड्स द कैथोड, मीन्स टूवर्ड्स द निगेटिव साइड. ऑटोमेटिकली प्रोटीन्स विल माइग्रेट फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव. तो समझ आ रही है वाई वी provide the pH of the buffer, or why we do, or why we set the charge of protein negative, because the movement of this protein must from negative to positive. okay, इस तरीके से मूवमेंट होती है हमारे प्रोटीन मॉलिक्यूल की. नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड शेप. तो मॉलिक्यूल और वी कैन से प्रोटीन्स, दिस आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स. अगर स्मॉल साइज के प्रोटीन हो गए तो वो फास्टली दे विल रीच एट द बॉटम, और अगर लार्ज साइज के प्रोटीन्स होंगे तो दे विल माइग्रेट स्लोली स्लोली स्लोली. ओके, एंड टू शेप्स आर मेंशन, वन इज ग्लोब्युलर एंड सेकेंड इज एलोंगेटेड. तो अगर see this is the size, small size molecule they move fast and large size molecule they move slowly, and this is the shape. जो ग्लोब्युलर प्रोटीन्स हैं वो फास्टली मूव होते हैं, और जो एलोंगेटेड प्रोटीन्स हैं वो स्लोली मूव होते हैं. वाई? बिकॉज ग्लोब्युलर प्रोटीन्स ये सर्कुलर फॉर्म में होते हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं, and the movement or migration is very fast, while this elongated protein, they are very elongated, they are very large. okay, so the movement of this large or elongated shape protein is slow as compared to the globular protein. So this is about the principle. Small size molecule will move fast, large size molecule will move slowly. Compact and globular proteins will move fast and elongated proteins will move slowly. okay, and charge का अगर हम देखेंगे तो pH बफर का कुछ इस तरीके से सेट किया जाता है कि हमारे प्रोटीन्स पर निगेटिव चार्ज हो. और हम बफर कौन सा यूज करते हैं, वी यूज द ट्रिसग्लाइसिन बफर, जिसका pH 8.7 होता है. और एक और प्रॉपर्टी मैंने आपको बोली थी, एट स्लाइटली बेसिक pH टोटल चार्ज ऑफ प्रोटीन इज निगेटिव. तो 8.8 या फिर 8.5, दिस इज द स्लाइटली बेसिक pH. तो इस pH में हमारे प्रोटीन्स ये निगेटिव चार्ज ऑक्यूपाई करते हैं, एंड द मूवमेंट इज फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव, मीन्स टूवर्ड्स द कैथोड, सॉरी फ्रॉम द कैथोड इलेक्ट्रोड टूवर्ड्स द एनोड इलेक्ट्रोड. ओके, so that is the principle. This is the diagram for the native gel electrophoresis. See, polyacryl amide gel हम use करते हैं instead of agarose, and you can see this large size molecule जो है square shape में, तो ये slowly move कर रहे हैं. और जो triangle shape में दिखाएं small size molecules, they move very fastly and reach at the bottom of the gel. और जो सर्कुलर में दिखाए हैं, दे आर वेरी लार्ज साइज मॉलिक्यूल्स एंड दे आर मूविंग टू स्लो थ्रू दिस जेल. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द नेटिव जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. और अगर हम इसका प्रोटोकॉल देखेंगे, इट इज सिमिलर टू द एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. वी प्रिपेयर द जेल, सिर्फ यहाँ पर हम पॉलीअक्राइल अमाइड जेल यूज करते हैं. वी प्रिपेयर द जेल, कॉन्सेंट्रेशन इज डिसाइडेड सो दैट पोर साइज उसकी हम डिसाइड कर सके. उसके बाद वेल्स हम क्रिएट करते विद द हेल्प ऑफ कोम. वी लोड द सैंपल इनटू दैट वेल, देन द जेल इज अलाउड टू रन आफ्टर सर्टन टाइम. और यहाँ पर हम सैंपल कैसे लोड करते हैं, इफ इट इज इन सेकेंडरी फॉर्म देन वी यूज सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. ओके, यहाँ पर हम किसी भी तरीके का डीनेचरिंग एजेंट यूज नहीं करते हैं. ओके, and then afterwards, after certain time, when the gel is been run, we visualize under the UV trans illuminator. So this is, तो देखिए ये हमारा जो फोल्डेड प्रोटीन हमने यूज किया है, सैंपल फोल्डेड प्रोटीन आफ्टर इलेक्ट्रोफोरेसिस, वो वैसा ही हमें विजुअलाइज होता है, वो वैसा ही रहता है. ओके, इट इज नॉट बीन डिस्टर्ब. सो दैट इज ऑल अबाउट द नेटिव इलेक्ट्रोफोरेसिस. नेटिव इलेक्ट्रोफोरेसिस भी हम उसे बोलते हैं. और अगर हम इसका एडवांटेज देखें तो इसका एडवांटेज यही है कि नेटिव फॉर्म ये
डिस्टर्ब नहीं होता है, जैसे हमने यूज़ किया है वैसे ही हमें सेपरेटेड फॉर्म में मिलता है। अगर हम इसका डिसएडवांटेज देखेंगे तो कभी कभार ड्यू टू दी बफर पीएच, ओके, ड्यू टू द पीएच ऑफ द बफर आफ्टर सेपरेशन the protein may lose its enzymatic activity. So this is the disadvantage. और अगर वो अपनी enzymatic activity lose करते हैं तो it is of no use. Okay, so that is one disadvantage of this native page. Okay, so that's all about this technique. If you have any doubt, you can ask me in comment section. Thank you.